India's most comprehensive platform. So this is the very good learning platform because here we are also running your separate series for the different PSU exams along with the GATE and EAC. So now suppose the BARC is coming because now we are almost 20-25 days left for the BARC examination, or we can say almost 1 month because 8th of April and 9th of April is the final date and still it is 6th. So 1 month we have for the BARC examination, and this is the time where you have to practice, you have to brush up the concepts. So because this is the daily practice question, so we will have 20-25 questions and as per the level of the BARC examination, and you have to solve this question. And if you are not able to learn some concepts, or you are not able to understand few concepts and you want to revise it, then you can ask the question, so we can discuss the concept as well. Okay, so let me know that if I'm absolutely audible or not. First of all, let me know whether I am absolutely audible or not. Yeah, so I can see that the students are still joining. So share it with your friends. Where do I get the DPP PDF, since I searched in both the Telegram groups mentioned in the description? Okay, so you have not got the PDF. So I will share, means my PDF I will share, and I will ask other students also. Pinky is saying no sound, but I am sure that the sound is absolutely fine. Okay, so before starting the session, let discuss about the brief introduction about myself. This is Saket Verma, and I am having more than 12 year experience in the field of GATE and ESE, and I have done MTech from IIT Guwahati and cracked a different PSU exam as well. And I teach these subjects, which are very important and core subjects for the electronics students. Yes, Deepa Ahuja, good morning. And GATE EC में 61.6 में क्या rank expect करें? Yes, if you are getting 61.67, that is very good rank, good marks actually, and you can expect under 200 to 50 rank. So Deepa, all the very best for the interviews and upcoming PSUs. Okay, because 60-61 marks, you will get the good rank this time. Not the very good under 100, I will not say, but yes, 200 to 50 will be the range for your score. Okay, for your marks. So, and this is the BARC to 2023 Super 15 series also we are coming. So, we will bring 15-16 questions especially designed for the BARC, and that will be free for in the YouTube channel. So, don't forget to subscribe the YouTube channel if you have not subscribed it yet. Okay. And there is a free workshop if you are going to prepare for GATE 24. Then what are the 5 critical do's and don'ts if you are preparing for a GATE and ESE examination, that the Richa madam will discuss with you on the 9th of March in the evening 7:30 p.m. And for this you have to register in the BYJU'S Exam Prep app, and that link of the app is given in the description. So the Telegram group is also given in the description. Link is also given in the description. So if you want to get this PDF, then you can join this Telegram group, and after the class I will be sharing the PDF of this class. Okay, sound is absolutely coming, Pinky. So please refresh and check once again, because as I can see in the my mobile, the sound is absolutely fine. Here you can listen with me. See, this is the sound. So what is the answer of this question?
For the vector A and B, what is the divergence of A cross B? What is the divergence of A cross B? Yes, absolutely fine. The divergence of curl is zero. Yes, Ayush and Pinky, absolutely fine. So the divergence of curl is always equal to zero, that we know. So the divergence of curl is always equal to zero. So this is based on the concept of vector identity, where the divergence of curl is always equal to zero. Now the next question. What is the answer of this question? Which one of the following relationship represents the Stokes theorem? So this is the type of question when you see in the BARC examination. Directly straightforward question. Yes, so the answer is integration over the closed loop A dot dl is equal to integration over the open surface curl of A dot ds. Okay, integration over the closed loop of a vector is equal to integration over the surface, the curl of that vector over the open surface, right? So if I write the complete statement, then it is Stokes theorem states that circulation around the closed loop, circulation of a vector around the closed loop is equal to curl of vector over the surface integral of curl of a vector over the open surface, equal to surface integral of curl of a vector, equal to surface integral of curl of a vector over the open surface. Okay, so this is absolutely fine. Now coming to the next question, which one of the following is not correct? Now you have to tell which one of the following is not correct. Okay, so remember that I am asking for not correct. Yes.
Again, the answer is option B because it is telling about the Faraday's law in the differential form. Okay, so this is nothing but a Faraday's law in the differential form. This is your Gauss law. Okay, this is your Gauss law. This is your magnetic monopole does not exist. Okay, or this one will be the Ampere's law, but there should be a plus sign and also there should be epsilon. So there is something missing which is plus and the epsilon sign. So the correct answer is option B. Now solve this question. Are you able to see this question? Sometimes some questions are also bit lengthy also comes in the gate BARC examination same as a gate. So this is the question where you have to spend some time. So solve this question and tell me what is your answer. What is properly visible? Question is properly not visible. It is completely visible. I think it is completely visible. Magnetic field component you have to calculate. Magnetic field component you have to calculate, Bholenath. Magnetic field component you have to calculate. The electric field component is given. And there is nothing about the reflection and etc. So you have to calculate only magnetic field component. Everything is given. So it is actually not lengthy. Come on. So magnetic field component is H naught is equal to E naught upon eta, right? And because it is traveling in the free space, so E naught upon eta naught we write. So this is nothing but a 5 upon eta naught, that is the magnitude of the H naught. What is the direction of magnetic field? The direction of magnetic field is the direction of propagation cross product with the direction of electric field. Okay, this is how we calculate because we know that in the plane wave, the electric field component, magnetic field component, and the direction of propagation are transverse to each other or perpendicular to each other. So according to this, we get this relation. So the direction of propagation is Z and the direction of electric field is X. So the direction of electric field is X. So we get the direction of magnetic field as Y. So the magnitude also we have got, the direction we have got. Then what is the expression? The expression of the magnetic field will be H naught, and this is nothing but a cos omega t. This is clearly X and this is Y. I don't know means what you are not getting. It is absolutely fine. Okay, it is completely visible. H naught is 5 upon eta naught. Okay, and cos of omega naught is 10 to the power 9. Beta is 20 by 3. And the direction of magnetic field is Y. So 5 upon eta naught. Here we have, this is option C. 5 upon eta naught. It is like a 5 upon eta naught. Okay, and right, so the direction here is Z, so the direction of magnetic field should be Y, so it should be yes, so actually there is a mistake in the option. There is a mistake in the option. It should be 5 upon eta naught, right? This should be 5 upon eta naught, or you can say 2 upon 10 upon 2 eta naught, like as a option C. So the direction of propagation is Z. The direction of propagation is Z only. Okay, the direction of propagation is Z only. So here there is a mistake in the option, as I said, that it should be 10 upon 2 naught, eta naught, same as the option C. So the correct answer is option B.
The correct answer will be option B if we have 10 upon 2 eternal, because all the other options are not matching. So we can modify this option B because there may be some typo error. So because of that, this answer I am considering as B. Okay. Now coming to the next question. The skin depth for a non-magnetic conducting material at 100 megahertz is 10.15. The distance which at the plane wave of 10 gigahertz travels in this material before its amplitude reduces by a factor of E inverse. You know that the skin depth is inversely proportional to the root over frequency, right? It is root over frequency. It is non-magnetic and conducting material. So that is for the conductor. Okay. For good conductor, we know that this is the condition, right? So this is del 1 upon del 2 equal to root over F2 upon F1. So the second frequency is 10 gigahertz and the first frequency is 10 to the power 8, that is 100 megahertz. So we are getting root over 10, okay, del 1 upon del 2. So that is del 2 is equal to del 1 square upon 10. So del 1 square means you can say 0.15, 0.15 divided by 10, right? So what is the answer? There is no answer which is matching. The skin depth for a non-magnetic conducting material at how you are saying option C 10 gigahertz, that is 10 raised to power 10 and this is 10 raised to power 8. Okay, okay, wait. This is 100, so it is 10. Okay, so this is 10. So del 1 upon 10. We don't need to calculate. So answer is 0.015. Option B should be there. Option B should be there. Okay, del 1 upon 10. So del 1 is 0.15, so 0.015 millimeter. That is the del 2. 0.015. Okay, so answer is option B. Okay, Bholenath, have you got this? So this relationship and thus the calculation you have to be careful. Actually, it is 10 raised to power 9 divided by 10 raised to power 8 I had taken, but it is actually 10 raised to power 10 because it is 10 gigahertz, not 1 gigahertz. Okay, so the answer is 0.015. Now solve this question.
You can see the solution na, Bhulenath, by using equal to e to the power alpha divided by z. How you are getting this? That by that relation you will get the same result. Delta is equal to 1 upon root f. Na? So I have given you the relationship. This relationship is correct. And if this relationship is correct, then what is the answer? This is 0.015. You are saying upon E is equal to E naught in E capital E naught e to the power minus alpha z should be there. So what is alpha you are taking? So that is good conductor. That is a good conductor. Medium is given already. So that is the mistake you have done. A lossless transmission line has a characteristic impedance of 100 and inductance per unit length is given, and if the line is operated at 1 gigahertz, then the propagation constant is. What is the propagation constant? That is beta for lossless. So it is root over L by C. Okay, and the Z naught is equal to 1 upon root LC. Just opposite I have written. This is Z naught and this is VP and beta is omega root LC. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. Now solve according to this. We want to calculate the capacitance first. So for this we will use the equation number 1. So that is Z naught square upon L by C. So C is equal to how much you will get, or you can, what you can do is you can multiply these two equations. That will be more appropriate. So if I multiply these two equations, beta into Z naught, then we will get omega into L. And we want to calculate beta, so this will be omega L upon Z naught. Omega is 2 pi into frequency. What is the frequency? Frequency is 1 gigahertz and inductance is 1 microhenry and the characteristic impedance is 100. So now you can tell what is your answer. So this is 2 pi into 10 to the power 5 radian per meter. Option D. Okay. Option D will be the right answer. Coming to the next question. Solve this one. See, check your calculation. Okay. When a load resistance RL is connected to a lossless transmission line of characteristic impedance 75, if the result is VSWR 2, then the VSWR is 2, then the load resistance is. So here you can see that the characteristic impedance, okay, the characteristic impedance is 75 and we want to calculate the VSWR. So the VSWR is 2. VSWR is 2. So how can we calculate? We can calculate the magnitude of reflection coefficient. Okay, so the magnitude of reflection coefficient is S minus 1 divided by S plus 1. So this is nothing but a 2 minus 1 divided by 2 plus 1 equal to 1 by 3. Okay, so the reflection coefficient is 1 by 3. We can have the ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught. So this is ZL we want to calculate plus Z naught is given and this is 3 ZL minus 3 Z naught. So here we will get 2 ZL, 2 ZL is equal to 4 Z naught or ZL is equal to 2 Z naught. So this is 150. 150 we will get option D. Here we have to consider the
magnitude of reflection coefficient actually, because all the resistance are given as resistive element. So we can say that the load is resistive. And if the load is resistive, and in all the cases, in all the options, there is one more way, that if all the in the all the options you can see that the load resistance is greater than 75. So here we can say that the load resistance is greater than 75. So according to this, the VSWR, okay, the VSWR should be ZL upon Z naught. Okay, so from here the ZL is equal to VSWR multiplied with Z naught, and the VSWR is 2. So this is 2 into 175, which is 150. So from here also you can calculate. So answer is 150. Answer is 150. Now solve this question. What is the answer of this question? Come on. Here the matrix S and its transpose are same, hence it is reciprocal. Okay, S and S transpose are same, so reciprocal. And now S11 mod square plus S12 mod square we will calculate. So S11 mod square is 0.3 square, and this is 0.9 mod square. So we are getting 0.90, which is not equal to 1, hence not lossless. Okay, but reciprocal but not lossless. Option B will be correct, right, Pinky? Option B will be correct. Next, solve this question. A lossless air-filled rectangular waveguide has internal dimension A and B, where A is equal to 2B and the cutoff frequency for the TE02 mode is 12 GHz. Then cutoff frequency for the dominant mode is. What is the cutoff frequency for TE02 mode? Okay, this is nothing but a C upon B, correct? So this is given as 12 GHz. So 12 into 10 to the power 9 equal to C upon B. Okay. Now, what is the cutoff frequency for the dominant mode? What is the dominant mode for the rectangular waveguide? This is C upon 2A. Now, it is given that A is equal to 2B. So, you can write A is equal to 2B here. So, you are getting C upon 4B. C upon B you have calculated, which is 12 into 10 to the power 9 divided by 4. So, when I will calculate it, you will get 3 into 10 to the power 9. That is 3 GHz. Option B. Okay. That is option B. Coming to the next question. A Hudson dipole is placed at the origin of a coordinate system and it is oriented along the z-axis. So, in which of the following plane the radiation pattern of the antenna has a circular shape? In which plane this will have the circular shape?
C. Okay. Anyone else? Yes, absolutely fine. Z is equal to 0. That is the simple basic nature of the antenna. We know that if you place the Hertzian dipole, yes, perpendicular direction. So this is Z axis. So this is Z axis. So the antenna will be placed along the Z axis, and hence the pattern will be like this. Okay. And when you will see in the top view, that it will look like a circle in the XY plane. Okay, this is Z is equal to 0. Yes, answer is C. Now answer this question. Which of the following statement is not true? Antenna losses are taken into account in the calculating its power gain. So that is the true. Okay, that is the true. For an antenna which does not dissipate any power, the directive gain does not dissipate any power. The directive gain and power gain are same. That is also true. Directivity of an antenna is the maximum value of the directive gain. That is also true. And the directive gain of Hertzian dipole is same in all the direction. That is false. Okay, because the directive gain is same in all the direction for isotropic antenna, not for the Hertzian dipole. Not for the Hertzian dipole. It is for the isotropic antenna. Yes. What is the directivity of a half wave dipole? Here it is simply written which does not dissipate any power. Actually, when there is no loss, which does not dissipate any power means when there is no loss, then the directive gain and the power gain are same. Okay, because the difference in the directive gain and the power gain is when we take the dissipated power into account in the input power dissipated taken into account, then it is power gain. Otherwise, it is directive gain. What is the directivity of a half wave dipole antenna? What is the directivity of a half wave dipole antenna? It is 1.1.6. Yes, Bholenath. 1.64 is the. Yes, Ramni, for EMT, you can practice Balinese and Sadiku only. There is no problem while solving the unsolved question of the Sadiku for the mains. Option C. This is the directivity of Hertzian dipole. This is the directivity of Hertzian dipole. This is the directivity of isotropic antenna. This is the direction of, sorry, answer of directivity of isotropic antenna, and then the option C is half wave. Which one of the following is true? Which one of the following is true? Divergence of f you have to calculate, and in the two different values pi equal to 0, pi equal to pi by 2, and also pi equal to pi by 4, and then you can compare. So first of all, calculate the divergence of f, and that is 1 upon rho del rho into f rho, then 1 upon rho del f
phi upon del phi and then del f z upon del z. Now solve the divergence. When we multiply the rho, so this will become rho square, so that is 2 plus, when we calculate it by the phi, this is 2 sine phi cos phi, that is cos 2 phi, and when we differentiate with respect to z, this is 1, so this is 1 plus cos 2 phi, 1 plus cos 2 phi. So pi by 2, at pi by 2, divergence of f is 0. At 0, the divergence of f is 2. Okay, and at pi by 4, the divergence of f is 1. Now we have to find the divergence of f is greater. No, that is not true. Divergence of f, they are also not same. The divergence of f at phi equal to 0 is greater than divergence of f at pi equal to 2. So that is correct. And the divergence of f at pi by 4 is 1 and 2 times of divergence of f. No. So option C is correct, right? Option C is correct. Now coming to the next question, you have to find some bit lengthy question. That is the calculate the reflected wave, guys. Calculate the reflected wave. Check your calculation, Bhulenath. Check your calculation. Okay. Simple question was there. है ना, सिंपल क्वेश्चन था वो. आपको देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको निकालना है, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा इसमें, तो सिंपल डिफरेंशिएशन आपको करना था विद रिस्पेक्ट टू फाई. आप कैलकुलेशन चेक करो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ रहा है. ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एच आई आपको गिवन है ना, और z लेस देन 0 पे एंड इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए लॉसलेस नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक विद द परमिटिविटी ऑफ 4 फॉर z ग्रेटर देन 0, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन फॉर द रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपको रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा है, तो सबसे पहले हम इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं. इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सप्रेशन अगर हम बात करें तो ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट, तो आपको दिया ही हुआ है, तो 10⁸ की ले लेते हैं, और माइनस बीटा इंटू जेड. ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ साइन 2 फाई कहाँ है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है भोलेनाथ. ठीक है, साइन स्क्वायर है वो, तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना. अब इसमें मुझे चाहिए बीटा का वैल्यू, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है ना. सो ओमेगा बाय सी, तो यहाँ से हमारे पास बीटा 1 ले लेता हूँ इसको, तो ओमेगा की वैल्यू हमको दी हुई है 10⁸, और ये 3 इंटू 10⁸, तो यहाँ से हमारे पास 1/3 आ गया, तो बीटा 1 की वैल्यू मिल गई. ठीक है, यहाँ पे बीटा 1 आएगा इंसिडेंट वेव के लिए. और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं ना, तो ये एच आएगा, यहाँ पे के आएगा. ठीक, तो यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे के आ गया. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है एक्स, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपको दिया है जेड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ ए वाई. ठीक है, तो माइनस ऑफ ए वाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंसिडेंट का डायरेक्शन है, तो रिफ्लेक्टेड का भी वही होना चाहिए था. एक सेकेंड, यहाँ पे क्यों गड़बड़ लिखा है, ये सब वाई होना चाहिए, ये सब वाई होना चाहिए ऑप्शन में.
ठीक है, चारों ऑप्शन में ये सब y होना चाहिए। ठीक, तो ये आ गया -ay। तो हमारे पास इंसिडेंट और ई नॉट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से ईटा इंटू एच नॉट हो जाएगा। तो ईटा 1, तो फ्री स्पेस है तो 120 पाई इंटू एच नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको 120 पाई मिली वोल्ट। तो आंसर इसमें मिली वोल्ट में भी नहीं लिखा है, चलो देखते हैं क्या है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पे। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे, तो ये होता है ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2 प्लस ईटा 1। ये हमारा नॉन मैग्नेटिक मीडियम है और परमिटिविटी 4 दिया है, तो सेकंड मीडियम का कितना आ जाएगा, 120 पाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 माइनस 120 पाई डिवाइडेड बाय 120 पाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 प्लस 120 पाई। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, सो -1/3 आ रहा है। ठीक, तो -1/3 आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है वो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया 125, ये पीक वैल्यू 120 पाई और डिवाइडेड बाय 1/3, तो यहाँ से आएगा -40 पाई। तो -40 पाई, ये सब मिली वोल्ट में, हाँ ये तो लिखा है मिली वोल्ट लिखा है यूनिट, तो -40 पाई, तो -40 पाई और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, तो इसका आंसर +40 पाई होना चाहिए, जो कि और रिफ्लेक्टेड भी है तो ये प्लस होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे है। तो एक बार चेक करते हैं, ईटा 2 तो ये तो 60 पाई यहाँ तो करेक्ट है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ एच, डायरेक्शन ऑफ के, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्स है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड है। तो यहाँ पे ये भी गड़बड़ है, ये प्लस साइन होना चाहिए, है ना, ये प्लस साइन होना चाहिए। 80 पाई आ सकता है क्या, 80 पाई एक बार चेक करें, 80 पाई हो सकता है क्या, नहीं ना, तो ये प्लस साइन होना चाहिए और आंसर होना चाहिए बी। चेक करो एक बार भोलेनाथ, विथ प्लस साइन द आंसर शुड बी बी, विथ प्लस साइन, क्योंकि बीटा 1 ही रहेगा, बट क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव है तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो पीक वैल्यू होगा वो ई आर नॉट हो गया। ठीक है, फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी ये भी ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, बस प्लस आ गया तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे बीटा 1 जेड, तो बीटा 1 तो भी हमारा सही निकला 1/3। अब 1/3 वाले दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी में तो 80 पाई दिया है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा तो सही आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा 1 दिया हुआ है वो कुछ मिसिंग हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एच नॉट को हमने 1 लिया है, तो हो सकता है कि ये 2 आ रहा हो, तो उस वजह से शायद 85 ऑप्शन डी भी हो जाता। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम सोचें और अकॉर्डिंग टू जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से ऑप्शन बी में यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सबका डायरेक्शन हम लोग सेम लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट का डायरेक्शन निकला है वो -ay निकला है, तो रिफ्लेक्टेड का भी -ay होगा, और ई आर नॉट अपने आप में निगेटिव निकला है, तो यहाँ से माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आंसर आएगा 40 पाई कॉस ऑफ 10⁸ 8t प्लस z/3 एंड ए वाई है। सो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये 75 ओम है। आदित्य रंजन डी होगा, क्यों 80 पाई कैसे आ रहा है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। नहीं,
When a lossless transmission line of length lambda by 8 is short circuited at one end, the input impedance seen at the other end is J50. If the short circuit is now replaced by a load resistance of 75 ohm, then the magnitude of reflection coefficient is. So ZL minus Z0, the load is now 75, so ZL minus Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पे Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा बाई 8 लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लैम्डा बाई 8 लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमको नहीं पता है, और इनपुट इम्पीडेंस हमको यहाँ पे दे दिया है कि ये कितना आ रहा है, J50। तो आपको लैम्डा बाई 8 लेंथ का अगर ट्रांसमिशन लाइन रहता है तो इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या आता है? तो इनपुट इम्पीडेंस इज नथिंग बट ए Z0 and ZL plus JZ0 डिवाइडेड बाय Z0 प्लस JZL, है ना। क्योंकि लैम्डा बाई 8 का मतलब हो गया बीटा एल, अगर हम लोग लिख रहे हैं L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8, तो बीटा एल के हिसाब से 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 8, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल, पाई बाई 4, तो जो 10 पाई बाई 4 था वो 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जेड इन की वैल्यू तो मुझे मिल गई है कि J50 है, और जेड नॉट मुझे नहीं पता है, और ZL की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किट है तो ये जीरो है ना। जे ZL प्लस JZ0, तो यहाँ से फिर से ये JZ0 आ गया, तो ये जीरो हो गया, तो ये Z0 आ गया, तो ये Z0 और Z0 कैंसिल हो गया, तो JZ0 इक्वल टू J50, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना आ गया, 50। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 आ गया। अब हमको निकालना है सिंपल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0। So 75 minus 50 divided by 75 plus 50. So 25 divided by 125. So answer will be 1 upon 5. Answer is option A, 1 upon 5. Next question solve करें। Two rectangular waveguides, one air filled with internal dimension and other electric field with internal dimension, having the same cutoff frequency, then what is the relative permittivity? What is the relative permittivity? Dominant mode ही consider कर लेंगे। अरे वाह सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो हम लोग बात कर रहे थे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, तो FC TE10 विथ डायलेक्ट्रिक, है ना, इक्वल टू FC-TE10 विथ एयरफील्ड। सो हम लोग को मालूम है कि C अपॉन रूट ओवर एप्सिलॉन R होगा विद डायलेक्ट्रिक, ठीक है। C अपॉन रूट ओवर एप्सिलॉन R, एंड विदाउट डायलेक्ट्रिक C अपॉन ये A डैश, इसको A डैश ले लेंगे, C अपॉन 2A डैश, ये एयर फील्ड है, राइट साइड वाला एयर फील्ड है, ठीक है। तो एयर फील्ड के केस में हमारे पास A की वैल्यू 2 है,
तो c अपॉन टू इंटू टू, और यहाँ से हमारे पास है c अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है, रूट ओवर एप्सिलॉन आर। तो c अपॉन टू कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 हो गई। बिल्कुल ठीक भोलेनाथ, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, ये वाला एयर फील्ड था, ये एयर लिया था मैं और इसको डाइलेक्ट्रिक लिया था। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉर द सर्किट shown in figure which one of the following is true? क्या आएगा बताओ? सीरीज एलिमेंट। अब इसको पूरा डिराइव तो नहीं करेंगे, आंसर आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर डायरेक्टली पता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर इसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक है, याद नहीं है? एस पैरामीटर नहीं पढ़ेगा, एस पैरामीटर से तो गेट में भी क्वेश्चन आया था, तो एस पैरामीटर तो पढ़ लेना चाहिए, अब दोबारा पढ़ लो उसको, है ना। ठीक है, तो एस वन वन जेड अपॉन जेड प्लस टू जेड नॉट। ठीक है, ये एस वन वन की वैल्यू होती है, और एस वन वन और एस टू टू आपका सेम होता है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अपन एस टू टू, एस टू वन ना। तो एस टू वन हो जाएगा आपका टू जेड नॉट अपॉन जेड प्लस टू जेड नॉट। अब बताओ रिलेशन, एस टू वन और ये एस टू वन और वन टू भी सेम होता है। अब बताओ क्या रिलेशन आएगा? ठीक है, एस वन टू इज इक्वल टू वन प्लस एस वन वन। हाँ, मैं पढ़ाया हूँ इसके पहले भी। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी, वन माइनस एस वन वन जेड अपॉन जेड प्लस टू जेड नॉट करेंगे, तो जेड प्लस टू जेड नॉट माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस टू जेड नॉट। ठीक है, तो ये एस वन टू की वैल्यू है। अब यहाँ से ये जेड और जेड कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एस वन टू। ओके, ऑप्शन बी आएगा इसका राइट आंसर, यस। चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे?
Consider an air-filled rectangular waveguide operating in a TE10. For this waveguide, lambda g is the guide wavelength, and lambda 10 is C10, lambda C10 is the cutoff wavelength corresponding to the dominant mode. Which one of the following is correct? So हमको ये रिलेशन मालूम है, 1/operating wavelength is equal to 1/lambda C10 लिख लेते हैं इसको, सॉरी 1/lambda C²। डोमिनेंट मोड के लिए वैसे लिख सकते हो, बट ठीक है चलो lambda C² लिख लेते हैं एक बार, प्लस 1/lambda G²। इसको आपको कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पे एयर फील्ड दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू बस आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगी। यहाँ पे C/F से कैलकुलेट कर लेंगे, F के टर्म्स में लिखना है, तो 1 इसको हम लोग लिख लेंगे C/F, राइट। C/F का स्क्वायर, लैम्डा C10 तो दिया ही हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं लैम्डा G² प्लस लैम्डा C² अपॉन लैम्डा C² इंटू लैम्डा G²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया F² और C² का मतलब हो गया C² यहाँ लिख लेते हैं, चलो ठीक है एक बार। फिर यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा G² प्लस लैम्डा C² अपॉन लैम्डा C इंटू लैम्डा G। अब 1/F के टर्म में लिखा है, तो इसको हम ले जाते हैं 1/F² लैम्डा C² एंड इंटू लैम्डा G² अपॉन लैम्डा G² प्लस लैम्डा C² इंटू C²। अब C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो होता है 1/√/μ0 तो यहाँ C² लिखेंगे, तो पहले तो 1/F लिख लेते हैं, तो बेटर होगा कि लैम्डा C लैम्डा G √लैम्डा G² प्लस लैम्डा C², और ये C हो गया, C इज इक्वल टू 1/√/ε0 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा μ0 इंटू ε0। क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो √/μ0 मल्टीप्लीकेशन में लैम्डा सी इंटू लैम्डा जी मल्टीप्लीकेशन में एंड √λg² प्लस लैम्डा C², सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ ट्राई दिस। सर एनटीपीसी की जो नई लिस्ट आई है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है या फिर वेटिंग लिस्ट की? सिलेक्टेड लिस्ट की कैंडिडेट की है ऋषिकेश, तो जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं एक्स्ट्रा सीट्स उन लोगों ने मेंशन किया है, उनमें से कोई अगर ज्वाइन करना चाहेगा तो वो कर सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, और उसमें से फिर इन लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो लिस्ट में जो नाम है ऋषिकेश, है ना, उसके में 1000 लोगों का नाम होगा, बट जितना भी सीट्स उनको रिक्वायर्ड होगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एक मेरिट लिस्ट बना के उनमें से फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। An electromagnetic wave having a f naught gets attenuated by a factor of e to the power -2 after propagating at a distance of d. If the signal frequency is now reduced to 0.5 f naught after traveling the same distance of the same conductor, then what should be the signal get attenuated by a factor of? बताओ क्या हो सकता है ये? इसको डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एफ ही बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे स्क्रीन डेप्थ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनवर्स नहीं है, बट डिस्टेंस तो वही स्क्रीन डेप्थ से ही निकलता है, तो मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो यहाँ पे Z1/Z2 से ही निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं बोला ना इसमें, एटेन्यूएशन फैक्टर बोला है। ओके, तो
इसको ऐसा करते हैं, ये आ रहा है। देखो हम लोग को मालूम है अल्फा जो होता है वो होता है रूट ओवर पाई एफ म्यू सिग्मा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अटेन्यूएशन फैक्टर से ना। तो अल्फा अपॉन अल्फा टू इज इक्वल टू रूट ओवर एफ वन अपॉन एफ टू। तो अल्फा वन हमारा एटेन्यूएशन फैक्टर ई टू पावर माइनस टू है, अल्फा टू हमको निकालना है। और एफ वन हमारा कितना था, एफ नॉट था, और ये हमारा 0.5 एफ नॉट है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये रूट में है। तो अल्फा टू की वैल्यू ई टू पावर माइनस फोर इंटू 0.25, तो 1/4 आ रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा, तो 1/4 आएगा ना। तो यहाँ पे हाँ मतलब ये एम्पलीट्यूड ई टू पावर माइनस फोर ठीक है। ई टू पावर माइनस फोर हम लोग बोलेंगे क्योंकि फैक्टर हम लोग को बोला ये तो 1/2.25 नहीं है, तो ई टू पावर माइनस फोर हम लोग ले लेंगे उसको कांस्टेंट लेके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के हिसाब से। ठीक है, ई टू पावर माइनस फोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an antenna having a gain of 10 dB radiates the 1 point। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग ऑप्शन ए ले लेंगे, वो ये मान के चल रहा हो कांस्टेंट, हमको सिर्फ फैक्टर बताना है कि कितने फैक्टर से हो रहा है। तो ठीक है, an antenna having a gain of 10 dB radiates the 1.5 watt power in free space, then the electric field intensity at a distance of 1 kilometer from the antenna is given by। पावर गेन आपको दिया है रेडिएटेड पावर। ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टिविटी मान के चलते हैं तो ये 4 पाई इंटू यू मैक्स होता था। तो यू मैक्स को हम लोग आर स्क्वायर इंटू पी एवरेज ले लेते थे, है ना, डिवाइडेड बाय पावर रेडिएटेड। तो ये 10 dB है तो 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 × 10⁻³ का स्क्वायर हो गया। अब ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू ईटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, तो यहाँ से आ गया ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ईटा। पावर रेडिएटेड 1.5 है, टू ईटा मतलब 2 × 120 पाई ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 30 आ गया। और उसके बाद ई नॉट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, रूट ओवर यहाँ से लेते हैं 1.5 इंटू टू इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। 30 डिवाइडेड बाई 10⁻³ आ रहा है कुछ वॉट। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लिया हूँ ना, अच्छा सॉरी 1 किलोमीटर, ये +3 होगा, ये +6, ये +3, सो 30 mV है। ऑप्शन बी 30 mV, यस 30 mV। ठीक है, नेक्स्ट, कर्ल ऑफ ए एट द पॉइंट 10012।
बताओ, कर्ल ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना है। ए एक्स, ए वाई, ए जेड, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। एक्स कंपोनेंट हमारे पास है वाई जेड, दिस इज 0, दिस इज एक्स वाई। कैलकुलेट करो। एक्स कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा एक्स ओनली, वाई कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा y minus here also y, nothing, and a z component मुझे मिल जाएगा again minus z। दो आ रहा है, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। x a x माइनस z a z आ रहा है, तो मतलब मैग्नीट्यूड हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से 2 स्क्वायर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक बोल रहे हो, आंसर आएगा 2, तो आंसर इज 2। Yes, answer is 2. Nothing is there in the option. Let's take option A as 2 and answer is the option। ठीक है, मैग्नीट्यूड बस बोला है ना, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, करेक्ट है। ठीक है, आंसर आएगा 2, बिल्कुल ठीक बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस? Which is not correct? Which one of the following statement is not correct? Which one of the following statement is not correct? आंसर डी आ रहा है, नॉट करेक्ट। डाइवर्जेंस ऑफ डी कैन बी करेक्ट ना, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट नहीं होगा। ये तो चार्ज फ्री रीजन के लिए पॉसिबल है ना, ऑप्शन डी। यस, नो मैचिंग बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का बी हम लोग एक बार अप्रोप्रिएट ले सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में अगर हम इसको बी इज इक्वल टू म्यू एच मान लें और म्यू की वैल्यू अगर 1 आ रही हो, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ऑप्शन बी किसी भी हाल में करेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी को ही हम लोग को बोलना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई वेक्टर भी नहीं लिखा है, तो थोड़ा मिस्टेक ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक होना चाहिए। चलो इसको बताओ। Solve this question. A quarter wave matching transformer is used to match a 30 ohm load to a line having a characteristic impedance of 120. So characteristic impedance of the quarter wave transformer is. So characteristic impedance of the quarter wave transformer is mean is geometric mean of the two impedance to be matched. So this is 30 into 120. What is there? 60. Answer is 60 ohm. Next, if the average power delivered to a load terminated to a lossless transmission line is 75% of that of the input impedance power. So here we are saying that if the average power delivered to a load terminated to a lossless transmission line, if the average power delivered to a load तो ये गामा स्क्वायर होता है ना, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ये परसेंटेज में अगर देखेंगे तो ये नॉर्मल 3/4 है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि रिफ्लेक्टेड पावर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इनटू इंसिडेंट पावर, तो ये रिफ्लेक्टेड पावर हुआ।
तो ये 1 - 3/4 नहीं होगा, 1 - गामा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, है ना। ये तो डिलीवर बोल रहा है ना, डिलीवर। तो डिलीवर जो होगा वो 1 - मॉड गामा स्क्वायर इंटू पी आई होगा। तो 1 - 3/4 कितना आ गया, 1/4 आया, ठीक है। सो 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आ गया हमारा, फिर से गलती कर दिया मैं, ये 1 - 1 मिनट, 1 - गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 है। तो 1 - हाँ वही मतलब, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और 1 - 3/4, और यहाँ से आ जाएगा 1/2, ठीक है। गामा मॉड गामा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1 प्लस मॉड गामा डिवाइडेड बाय 1 - मॉड गामा इज इक्वल टू स्टैंडिंग वेव रेशियो। सो 1 + 1/2 एंड 1 - 1/2 से हमारे पास कितना आ गया ये, 3/2 हो गया, यहाँ से 1/2 हो गया, तो आंसर आ गया 3। 3 आया, आंसर आएगा 3, क्योंकि हम लोगों को तो ये वाला पार्ट दिया हुआ है ना कि 75% आपका टर्मिनेट हो, डिलीवर हो रहा है। तो 1 - गामा स्क्वायर को मुझे 3/4 लेना था, तो यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू 1/2 है, मॉड गामा की वैल्यू, स्टैंडिंग रेशियो की वैल्यू हमको मालूम है कि 1 + मॉड गामा होता है, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। In a microwave measurement with the slotted rectangular waveguide, the distance between the two successive minima is found to be 2.4. So minima के बीच का टू सक्सेसिव मिनिमा तो λ/4 हो गया, तो ये 2.5। तो हम लोग निकाल लेंगे C/2F इज इक्वल टू 2.5। सो F इज इक्वल टू C/5। ये तो पहला ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आ गया, ठीक है। ठीक है, तो फिर if the measurement has been carried out at a frequency of 10 gigahertz and the guide operates at T10, then the cutoff frequency for the guide is, what should be the cutoff frequency for the guide? What should be the cutoff frequency? It is asking for the, actually it is a question for the microwave communication. So because plotted rectangular waveguide we don't have, we haven't studied in the EMFT, right? So how can we solve it? Because we, if we think of that, it is nothing but a T10 के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास C/2A होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को 10 बोल रहा है, ठीक है। तो ये 10 हमको किस लिए काम आएगा, if the measurement has been carried out at 10 gigahertz।
तो आई थिंक यही होगा कि इससे 10 फैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसका आंसर 10 आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम, क्योंकि ये माइक्रोवेव स्लॉटेड लाइन का है तो उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ से तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका सक्सेसिव मिनिमम वाला है माइक्रोवेव स्लॉटेड लाइन। एक बार मैं आपको देख के बता भी देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर एरिया इफ द डायरेक्टिविटी ऑफ टू एंड फ्रीक्वेंसी इज 300 मेगाहर्ट्ज। मैं एक मिनट उसको देख के भी बता दूंगा, कल आपको बता दूंगा, कल कम्युनिकेशन की क्लास है ना, तो कल बता दूंगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर एरिया ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू द डायरेक्टिविटी होता है। सो सी अपॉन एफ, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 × 10⁻8। ये भी आपका 3 × 10⁻8 ही है। सो डायरेक्टिविटी आपका कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, सो 1/2 पाई। यस, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और वो वाला जो स्लॉटेड वाला है ना, इस क्वेश्चन को मैं आपको कल बता दूंगा। कम्युनिकेशन की कल क्लास है, तो कल आप लोग अटेंड कर लेना इसी समय पे 11 बजे। कम्युनिकेशन के भी ऐसे ही 25 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं माइक्रोवेव मेजरमेंट वाले को मैं देख लूंगा, अगर उसका कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट नहीं होगा तो उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बार्क के एग्जाम में माइक्रोवेव के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिले। कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द गेट सिलेबस में मिल सकता है, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को भी कल डिस्कस कर लूंगा। तो कल सुबह 11 बजे हम लोग मिलते हैं कम्युनिकेशन की क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। डाइवर्जेंस वाला कैलकुलेशन मेरा सही है, मैं आपको बताया था, साइन स्क्वायर आएगा उसमें, है ना, साइन स्क्वायर था वो। तो वो आंसर सही है, तो उसको आप चेक कर लेना एक बार, ओके। बोले ना, तो आप एक बार चेक कर लेना उसको, मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। थैंक यू। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाई, उसका डिफरेंशिएशन 2 sin phi cos phi तो होगा। और 2 sin phi cos phi को आप sin 2 phi तो बोलोगे।
ठीक बोल रहे हो। अगर हाँ मैं cos 2 फाई लिख दिया था ना, हाँ sin 2 फाई आएगा। ठीक बोल रहे हो। मैं cos 2 फाई लिखा था, मुझे लगा कि मैंने sin 2 फाई लेके ही सॉल्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। चलो ठीक है। तो उसको cos 2 फाई ना लेके sin 2 फाई लेके सॉल्व करना, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा उसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये cos में नहीं हो रहा है। हाँ ये वाला था ना। तो ये वाले में ये cos 2 फाई sin 2 फाई होगा। तो sin 2 फाई के अकॉर्डिंग पाई बाय 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा।